So welcome back dear students. We are starting with next question of exercise 5.3, which is question number 10. Show that A1, A2 and so on AN form an AP where AN is defined as AN is equal to 3 plus 4N. So what is we are given? We are given AN is equal to 3 plus 4N. We put the values of n. If we put n is equal to 1, we will get A1. When we put n is equal to 2, we will get A2. For n is equal to 3, A3 and so on. We are to show that this sequence, which is formed by the terms A1, A2, A3, A4 and so on, it is an AP. See, so in this term an is equal to 3 plus 4n, we will put n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. When we put n is equal to 1, it becomes A1, 3 as it is, plus 4. In place of n we have put 1. So it is 3 plus 4 is equal to 7. So what do we get the first term? It is 7. For n is equal to 2, 3 as such, plus 4 into, in place of n we are putting 2. 4 into 2 becomes 8. 3 plus 8 is equal to 11. For n is equal to 3, it is 3 plus 4 into 3. 3 plus 12 is equal to 15. For n is equal to 4, it is A4 is equal to 3 plus 4 into 4 is equal to 3 plus 16 is equal to 19. So the given sequence is 7, 11, 15 and so on. We have to check with whether it is an AP or not. See, what is the difference between 11 and 7? 4. 15 and 11? 4. 19 and 15? 4. So it is an AP. So the given sequence is 7, 11, 15 and so on. It is an AP with A is equal to 7 and D is equal to 11 minus 7 is equal to 4. And what is, see, we are given, we have to find the sum of first 15 terms of AP in both the parts. So we are doing first part, we have to find the sum of first 15 terms. What is n given? N is 15. What is the formula for Sn? It is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 15 by 2, 2 into, what is a given? 7 plus 15 minus 1 into d is 4. So it is 15 by 2 into 14 plus 14 into 4. 15 by 2, 14 plus 14 4s are 56. So 15 by 2 into 70 is equal to 35. So what do we get? Sum of 15 terms, it is equal to 525. Second part I have done for you. You will see it yourself. We are coming to the next question. Question number 11. Question number 11 is, question number 11 of this exercise is, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. So what is we are given? Sum of first n terms we are given Sn is 4n minus n square. We are given sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. What is its first term? What is the sum of first two terms? क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालनी है. फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है. What is its second term? फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म निकालनी है, सम ऑफ टू टर्म्स निकालना है. देन वी आर टू फाइंड इट्स थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म. सी, वी हैव Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. Sn का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. मतलब S1 का मतलब क्या है? पहली टर्म का सम. पहली टर्म का मतलब सम मीन्स फर्स्ट टर्म ओनली. S2 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2. S3 का मीनिंग क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3. S4 का मीनिंग क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4. इसका मीन्स फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वो तो सेम ही हुआ, एक ही टर्म है, उसमें क्या ऐड करेंगे? सो वी हैव A1 इज इक्वल टू S1 and we will put equal to 1. 4 into 1 minus 1 square. 4 minus 1 is equal to 3. S2.
S2 इज इक्वल टू, S2 का मीनिंग क्या है? S2, for S2 we will put n is equal to 2, 4 into 2 minus 2 square, 8 minus 4 is equal to 4. S2 का मीनिंग क्या है? S2 is the first sum of first term and second term. S2 means sum of first term and second term. So आप देखो ये S2 sum, ये जो आया है 4 आया है, it is sum of first and second term. 3 क्या है? फर्स्ट टर्म है. तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? S2 माइनस S1. 4 minus 3 is equal to 1. We have a formula earlier. I told you there is a formula an is equal to sn minus 1. मतलब अगर आपको a3 निकालना है तो आप क्या करोगे? a3 माइनस s2 माइनस s3 माइनस s2. 3 टर्म्स के सम में से अगर 2 टर्म्स के सम को माइनस कर दोगे, फर्स्ट 3 टर्म्स के सम में से अगर फर्स्ट 2 टर्म्स के सम को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म आ जाएगी. नाउ व्हाट इज s3? For S3 we will put n is equal to 3. 4 into 3 minus 3 square. 4 into 3 is 12. Minus 9 is equal to 3. So A3 will be S3 minus S2. S3 कितना निकाला है हमने? 3. S2 कितना निकाला था? 4. So 3 minus 4 is equal to minus 1. Similarly generalize करते हुए when we are to find the value of A10, A10 will be equal to S10 minus S9. Now we will find out the value of first S10. S10 is equal to n क्या पुट किया? इस Sn में 10 पुट किया. 4 into 10 minus 10 square, 40 minus 100 is equal to 60. S9 भी निकालेंगे ऐसे ही. S9 निकालने के लिए we will put n is equal to find out S9 we will put n is equal to 9. When we put n is equal to 9, it is 4 into 9 minus 9 square. 36 minus 81 is equal to 45. So what is A10? A10 will be equal to S10 minus S9. क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? an is equal to Sn minus Sn minus 1. So S10 कितना निकाला था हमने? minus 60. S9 कितना निकाला? This minus of formula, and the value of S9 is minus 45. So it is minus 60 plus 45 is equal to minus 15. Now he has said find the value of an also. An is equal to Sn minus 1. Sn तो हमें गिवन ही है, 4n माइनस एन स्क्वायर. अब Sn माइनस 1 निकालने के लिए जहाँ पे भी n है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? n माइनस 1 से. सी दिस 4 एज इट इज़. n को किससे रिप्लेस कर दिया? n माइनस 1 से. यहाँ n स्क्वायर था तो n की जगह मैंने क्या पुट करना है? n माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर. सो टू फाइंड आउट Sn माइनस 1 वी विल रिप्लेस n बाय n माइनस 1. So it is 4 into n minus 1 minus n minus 1 whole square. 4n minus 1 minus whole square ओपन करेंगे. n square plus 1 minus 2n. कौन सी आइडेंटिटी लगाई? a minus b whole square की. a square plus b square minus 2ab. 4n minus 4 minus n square minus 1 plus 2n. So what is 4n plus 2n? It is 6n minus n square minus 5. ये Sn की वैल्यू थी और ये हमने किसकी निकाली है? Sn माइनस 1 की. और An का फार्मूला क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1. सो Sn की वैल्यू पुट की माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू पुट की, एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट An इज इक्वल टू 5 माइनस 2n. सो इन जनरल फॉर्म इट्स nth टर्म इज गिवन बाय 5 माइनस 2n. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers divisible by 6. What is the first integer divisible by 6? 6 positive integers लेने. What is next? 12, 18, 24 and so on. कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो डिविजिबल बाय 6 है? 40. मतलब n कितना निकालना है हमें? n कितना गिवन है? 40. और हमें क्या निकालना है? इस AP की 40 टर्म्स का सम वी आर टू फाइंड आउट. सी आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट अगेन.
Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. So what is A? 6, D is 6, and N is 40, and we have to find the sum of 40 terms. Again substituting the formula, Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. So it is equal to 40 by 2. In place of n we have substituted 40 by 2 into 2 into 6 plus, what is the value of n? 40 minus 1 into 6, 20 into 12 plus 39 into 6, 20 into 12 plus 234, 20 into 246 is equal to 4920. So sum of first positive integers, first 40 positive integers which are divisible by 6 is 4920. Next we'll continue in the next video. Thank you.